अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स, जो कि फिजिक्स की क्लास 9th का चैप्टर 2 है। हमने इस काइनेमैटिक्स को कन्वर्ट किया टू फॉर्म्स में। वन इज थ्योरी सीरीज, अदर इज न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट दी थ्योरी, देन न्यूमेरिकल। So we started from theory, that is chapter 2. Chapter 2 की जो थ्योरी है वो रेलिवेंटली न्यूमेरिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर रिलेटिवली इम्पोर्टेंट देन इट्स न्यूमेरिकल। व्हाई? सबसे बड़ी रीजन ये है कि these are the basic parameters of science and physics. So when starting from a body in motion or body in rest, these are all covering in kinematics. Firstly, सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि व्हाट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स होता क्या है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। दैट इज, हमने काइनेमैटिक्स को स्टडी करना है, दैट इज काइनेमैटिक्स is the branch that doesn't cause of motion पे को स्टडी नहीं करती। नॉट स्टडी। व्हाई? बिकॉज साइंस के अंदर या अल्टीमेटली हम फिजिक्स के अंदर दो चीजों की बात करते हैं, दैट इज वन इज काइनेमैटिक्स, अदर इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोशन, और काइनेमैटिक्स की जब बात करेंगे वो बात करेंगे विदाउट या विदाउट द रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ अ मोशन। कॉज ऑफ अ मोशन, अब कॉज, हमने कॉज ऑफ मोशन को बिल्कुल नहीं पढ़ना इसमें, फर्स्टली। सेकेंडली, कॉज ऑफ मोशन है क्या? कॉज ऑफ मोशन डिपेंड्स करती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन डिपेंड्स ऑन रेवोल्यूशन, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन फोर्सेस। तो इन काइनेमैटिक्स वो डजंट डील विद फोर्सेस। जहां पे फोर्स आएगा वहां काइनेटिक्स आएगी, एंड विदाउट फोर्स दैट इज काइनेमैटिक्स। दिस इज सिंपल, दैट इज काइनेमैटिक्स विदाउट फोर्स। Kinematics, that is without force. When we are studying kinematics, so आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी kinematics के वो विदाउट फोर्स है, नॉट टेकिंग द फोर्स। अब सबसे पहले जो इसमें पैरामीटर आएगा, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन सबसे पहले हमारी, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है जो एट द 1 सेकंड पे, यहाँ, हाँ, इस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट 1, अ बॉडी ए एट 1 सेकंड, एक सेकंड में वो इस पॉइंट पे, आफ्टर सम टाइम, दैट इज आफ्टर ट्रेवलिंग, आफ्टर 10 seconds, this body is there, so the location changes to dash. So अगर हमारी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, changing its position with respect to time, it's known as the body is in motion. Body is in motion. अगर मेरी कोई सिस्टम है दूसरा, दैट इज बी, सिस्टम बी, जो एक सेकंड पे भी इधर है, एंड आफ्टर 10 सेकंड उस बॉडी की पोजीशन उसी जगह पे है, सो द बॉडी इज नोन टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सो जो मेरे पास मोशन है, मोशन इज टाइम डिपेंडेंट, मोशन टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट। सो दिस इज द रेस्ट। सो अभी तक जो रेस्ट और मोशन को जो हमने कवर किया है, दिस इज द पोर्शन। सो रेस्ट when it doesn't change its position with respect to surrounding, and the motion when it changes its distance with respect to surrounding. Then सबसे जरूरी, अब मोशन हमने कवर कर, रेस्ट को तो हमने पढ़ लिया ना कि रेस्ट जो है, if a body doesn't cover its
any distance, it's known as a body at rest. अब मोशन के अंदर टाइप्स हैं, आया वो मोशन कैसी है, it depends on circle, it is linear, it is arbitrary. अब जो ये इसकी टाइप्स हमने पढ़नी है सारी के, analyzing the types of motion के what the type is. So first type हमारे पास आती है, that is translatory motion. Second is rotatory motion, and third is vibratory motion. So translatory motion हम कहते हैं moves along a line without any rotation. For example, अगर मैं travel कर रहा हूँ in a road और यहाँ एक U turn आ गया, U turn लेने के बाद दोबारा मैं एक लाइन कवर करके फिर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूँ without any linear elaboration. अब ये देखो इसमें रोटेशन आई या नहीं आई, it's cover some rotation, that is this one. तो ये हमारी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल इन अदर केस, अगर मैं एक सिस्टम चल रहा हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ फिर उसके बाद दोबारा जीरो पे आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर हाइट पे जाने के बाद फिर जीरो पे आ रहा हूँ. अब देखें इस सिस्टम में एक पॉइंट आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस वन, फाइव इज दिस, सिक्स इज दिस. This system doesn't rotate. This system doesn't rotate. It's known as, this type of motion is known as translatory motion. इसको हम कहते हैं translatory motion. So जो हमारे पास moves along a line without any rotation, अगर हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एक जो मेन रीजन याद रखनी के, विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन. सो दिस इज नोन एज अ ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन जो हमारे पास दैट इज दिस अलोंग अ कर्व पाथ, जो कर्व पाथ आते हैं हमारे पास, और उसके बाद लीनियर पाथ भी है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, और जो कर्व पाथ है it's also a type of a translatory motion. Then for example, अब ये केस आ गया. अब इस केस में देखिए कि हमारे पास जो सिस्टम है, दिस इज पिवट फ्रॉम दिस पॉइंट, उसके साथ हमारा यहाँ पे एक बॉडी है, एक इधर बॉडी है, देन दिस. अभी देखिए, अब इस सिस्टम की रोटेशन, ऑटोमेटिक रोटेशन क्या है, दैट इज दिस वन. अब ये पॉइंट पिवट है, पिवट पॉइंट का मतलब ये है कि it carries some translational, not the rotation. That is this point, this point, this point, this point. Is there any rotation? There is no rotation if the point is fixed. Always remember, if the point is fixed from center, then no rotation. For example, in case of Ferris wheel, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू पिन पॉइंटिंग. अगर हमारा पिन पॉइंट है, यानी कि इफ देयर इज अ पिन एट सेंटर, देन द रोटेशन इज ट्रांसलेशनल. सेकंडली ये कि एक सिस्टम कवर कर रहा है, वो सिस्टम क्या कवर कर रहा है कि जो हमारी एरो पाथ है ये फिक्स्ड है, ये उस पॉइंट के साथ फिक्स्ड है, यानी कि सिस्टम जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ रोटेशन के थ्रू चेंज हो रहा है. बाय फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक थ्रेड है और उस पे समथिंग इज देयर, अगर मैं उसे रोटेट कर रहा हूँ, अब रोटेट कर रहा हूँ तो ये सिस्टम भी मेरे हाथ के साथ चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल, this point changes with respect to this point because the center rotates. If the center point increasing or decreasing its location, for example, if the center point somewhat rotate, it rotates the whole body. This is the other case, it's known as circular motion. ये मेरे पास circular motion है. So linear motion जो है मेरे पास, linear motion is this straight line, simple straight line in air and vertical, and circular motion is the motion in the circular path. It's known as circular motion.
अब हमने 3 चीजें डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। वो चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज द लीनियर मोशन. Linear motion is the state and or a curve. For example, this is the first type, second is this one, and third is the Ferris wheel. ये तीनों जो एग्जांपल हैं, that is the translational motion. Translational motion. These are three types of translational motion. अब इसकी translational motion के अंदर first type is linear motion. This is the linear motion in this straight path. For example, aeroplane flying in the straight line, object flying vertically around downward, and ball vertically downward. These are all the example of linear motion. So linear motion is the type of translational motion. Linear motion. Second case is circular motion. Circular motion, वो जिस तरह मैंने आपको बताया था, the motion of object in circular path. This is the circular path. This is the circular path. Ferris wheel and stone tied at the end of the string moves in a circle. It's the circular motion. So this is the second type. This is the first type. This is the second type. That is translational motion. Now, अब उसके बाद random motion. For example, the third type is, the third part is जो हमारे पास था, that is this one. यूं जा रहा है, ये जा रहा है, इसके बाद there is not a defined structure or a defined distance. This type is known as random motion. So first is the linear motion, then random motion, and then circular motion. So जो translational motion है, translational motion, it depends on three qualities, or it's at three types. First one is linear, second is circular, and third is random. These are the three types of translational motion. Hope so अभी तक आप रिव्यू के थ्रू इन तीन टाइप्स को सही तरह पहचान चुके होंगे. That is the first, the mother is the translational motion, and the other three types are linear motion, circular motion, and random motion. Second type is the second rotational motion. Rotational is the spinning. Rotational को याद रखने के लिए आपने that is rotational. It's the spinning motion. Spinning का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास टॉप है जो सर्कुलरली मूव कर रहा है और इस अपने सर्कल के उसी एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है. दैट इज दिस रोटेशन. दिस टाइप ऑफ रोटेशन होती है मेरे पास टॉप की. और सेकेंडली व्हील की, जो अपने ही एक्सेस के गिर्द घूमते हैं. दैट इज स्पिनिंग रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन about its axis. This is the main point. कि अपने एक्सेस के सर्कुलर, दैट इज द एक्सेस, ये एक्सेस है इसकी बेसिकली, दिस सर्कुलर पाथ, इसी सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करता है. इट्स नोन एज अ रोटेशनल मोशन. सो अब हमसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन? So the motion of earth around the sun is circular motion, and not the spinning motion. Why? Circular motion is of the circular path, while the rotating motion is the spinning motion of the body around its axis. तो जो हमने पढ़ा है that is this, कि हमारा अगर एक ही सिस्टम है, that is ये हमारे एक्सेस है, this is the point pivot point है, वो इसी के along मूव करता है. For example, in Ferris wheel or in a stone tied in a string, तो ये हमारे पास है rotational motion, sorry, circular motion. और इन केस अगर मेरी बॉडी जो है इस तरह मूव कर रही है,
that is this one randomly, that spinning. Spinning is all about the rotatory motion. अब जो हमारा मेन पॉइंट इज, अब जो रिपीटिशन के साथ एक सवाल रिपीट करता है, दैट इज आवर सोलर सिस्टम रोटेशन। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस तरह रोटेट करता है, सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम की मोशन क्या है। अब देखें, दिस इज अवर सन, दैट इज सन, और ये हमारी अर्थ है, दैट इज दिस वन। अब चेक करें, अब हमारी जो मोशन है, मोशन कवर्स इक्वल, दैट इज दिस रोटेशन। जो हमारा एक्सेस है, क्या हमारा एक्सेस चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, एक्सेस हमारे वही है, इट कवर्स अ सर्कुलर मोशन। तो ये जो मेरे पास मोशन है, इट्स अ सर्कुलर मोशन। सो हमेशा याद रखिएगा, जो भी द अर्थ अराउंड द सन इज द रोटेशनल मोशन, is the circular motion, sorry, is the circular motion that it doesn't changes its axis. If the body changes its axis, it's known as a circular motion. Then vibratory motion. Vibratory is just a to and fro motion. To and fro mean, for example, if a system starts from there, it ends there, then ends there. So the pendulum, seesaw, pendulum, seesaw, pendulum, seesaw is the vibrational motion. Is the vibrational motion. So, in firstly we covered the three types. Now I am repeating again. First, the translational motion. Translational motion. Second is rotational motion, या rotatory motion. And third is vibratory motion. Translational motion, rotatory motion, and vibratory motion. These are three types of motions. After this, next topic is scalars and vectors. What is scalar and what is vector? For example, अगर हम दो चीजों को एनालाइज करते हैं, that is first is 10 and second is 10m. What is this 10? What is this 10m? 10 is just a solid number, okay, and 10m mean 10 meters. So what is the difference? This is the vector or a scalar. How to analyze? How to analyze in physics? अगर मेरी जो describe हो रही है only its magnitude. Magnitude mean a number. यानी कि this 10 is a number, solid number. It's known as scalar. ये quantity मेरे पास क्या कहलाती है? Scalar. अगर for it's not described by its only magnitude, also by its direction. That is this 10 meters, 10 kg, 10 seconds. These are all the vector quantities. Vector quantities. Now representation of vector quantities. Always the representation in bold letters. For example, force. Force है तो हमारा ये force इस तरह आएगा, बड़े में आएगा. अगर force के ऊपर मेरे पास ये स्लैश आएगी, इसका मतलब है force vector है. और तीसरी representation है ये force के ऊपर this. So these are the representation. So जो भी है मेरे पास, for example acceleration आ जाती है. Acceleration simple a छोटा a, then acceleration with a slight bar, and then acceleration with a slight arrow. So these are the general representation of vector quantities. Now terms associated with motion. For example, position. First is position. Position is the main thing. For example, position describes the location of a place or a point
with represent to its same or someone known as origin. अगर for example ये मेरा origin है, that is this point is origin, और मेरा कोई point है that is A, वो इस part पे इस पे, then the position is this, the distance or the location of a place or a point from its origin, कि वो origin से कितना दूर है, it's known as the position of A. This is the position of A from what? With respect to origin. So the position describes the location, that is the location of a place or a point with respect to some referred point, that is origin. This is the origin. So after origin, there is two main, distance and displacement. For example, when I'm taking distance from this point, then this, and this. For example, this is my starting point, that is A, that is the starting point, and this is the point B. B is the ending point. So the जो हमारा इस पॉइंट से लेके that is this curved line क्रॉस करके और ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, दैट इज फुल पाथ जो है डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल इसके बरक्स जो सेकंड इस क्या पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज दिस वन, दैट इज जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है. सो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ पाथ, जो जितनी लेंथ है मेरे पास पाथ की वो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है. डिस्टेंस इज जस्ट द लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो सो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी and the displacement is vector quantity. So distance की जो नोटेशन है वो हम लिखते हैं डिस्टेंस को s से और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं d से. These are the three main points. Then the other comparison is speed and velocity. Speed, अगर हम speed की बात करते हैं, the distance covered by an object in a unit time is the speed. For example, speed क्या है, speed equals to, for example मेरा वही path दोबारा अगर हम उसी तरह arbitrary path बनाते हैं, that is the A and this is B and the full path covering is known as distance. अगर मेरा सिस्टम कवर क्या कर रहा है, कवर द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस कवर, अगर हम देखते हैं डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में, इट्स नोन एज दिस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब स्पीड को लिखते हैं v से, आपको पता है डिस्टेंस को लिखते हैं s से और टाइम को लिखते हैं t से. सो यूनिट डिस्टेंस क्या है हमेशा इन मीटर्स एंड टाइम्स इन सेकंड्स. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स मीटर बाय सेकंड, और इसे हम लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड. जब ये ऊपर जाएगा तो इट्स कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन. So that is this is the derivation of all the derivation of speed with respect to distance and time. What is uniform speed? If a body covers equal distance in equal interval of time. For example, ये मेरा सिस्टम A है, अगर 2 सेकंड के बाद आफ्टर 2 seconds वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर, एंड after 2 seconds it also covers the distance of 2 meter, then this after 2 seconds it's also covered the distance of 2 meter. The system is known as uniform speed. इस सिस्टम की क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी. फॉर एग्जांपल डिराइव कैसे हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, हाउ टू डिराइव, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए, मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है ए पॉइंट की. A point, how much distance is covered, 2 with respect to time, that is 2. So the answer is 1.
that is point B, and this is C. For the velocity at B, how much time total from origin to this 4, and how much second? 4. Answer is 1. For C, total distance is 6 and total time is 6. Answer is 1. So this system is known as uniform speed. Uniform speed. So when it covers equal distance with respect to equal time, it's known as uniform speed. This is a general representation and the uniform velocity, and it's all covers. And now the velocity is a, अगर हम velocity की बात करते हैं तो velocity हमारे पास है displacement, that is the shortest distance, displacement with respect to time. So velocity is equals to displacement per unit time. So if the velocity is this, distance displacement क्या है, that is displacement this, and time is this. So velocity is equal to this. So velocity is equals to meter per second. अब देखिए जो हमारी स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है, बट द डिफरेंस इज स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, speed scalar quantity, and the velocity, it depends on direction too. Velocity is a vector quantity. इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. A body has a uniform velocity. कब होगी? If it cover equal displacement in equal interval of time, this is known as velocity. So यहाँ तक हम क्या चीज, दो चीजों का कंपैरिजन, मैन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, ये चार चीजों का कंपैरिजन देख चुके हैं. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Now the next thing begins, that is acceleration. If a velocity changes with respect to time, that is acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration equals to change in velocity by time, that is time taken. So what is change in velocity? Change in velocity mean final velocity minus initial velocity. What is final velocity? Final velocity is the body's at end velocity, that is Vf minus Vi. For example, एक सिस्टम की velocity at start है 2 meter, for example 2 meter per second, that is Vi, और 10 meter per second at Vf. अगर हम सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, so the velocity, change in velocity, that is del V. Del V किस तरह लिखेंगे हम? Del V is equals to Vf minus Vi. So Vf is 10 and this is 2. So the change in velocity is equals to 8 meter per second. So the acceleration equals to change in velocity del V divided by time taken. So how much time? So del V, final velocity minus initial velocity. So this is the acceleration, that is change, rate of change of velocity of a body is known as the acceleration of a system. Now next is deceleration or retardation. Retardation or deceleration का मतलब ये है कि if the velocity of a body decreases,
इस डिक्रीजेस का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये एक सिस्टम है दैट इज ए, आफ्टर 1 सेकेंड, after 2 seconds for example, its speed is 1 meter per second. After 2 seconds, its speed is 2 meter per second. That is, velocity increases. If the velocity increases, it's known as acceleration. For other system, for example, after 2 seconds, the system velocity is 10 meter per second. And after other 2 seconds, the velocity decreases 5 meter per second. So this system is known as deceleration or retardation. Deceleration or retardation, that is this one. So deceleration is the decrease in the rate of acceleration, that is the negative acceleration. So it's also known as negative acceleration too. Now uniform acceleration. If a body covers, for example, a system, it after 1 second it has 2 meter per second. After 2 seconds it covered also 2 meter per second. After 3 seconds it also covered 2 meter per second. Then the system is known as uniform velocity or uniform acceleration. अगर मेरी velocity same रहेगी with respect to time, then the system is known as uniform acceleration. So there is the main, यहाँ पे हमारा main जितने topics हैं with respect to kinematics वो खत्म हो रहे हैं. इसके बाद हम graphical analysis पे आ रहे हैं. So the graphical analysis begins with the motion. For example, motion का हमने graph basically क्या है? Graph is the pictorial way of presenting information. Okay. For example, two quantities. ये हमारे पास एक quantity यहाँ पे होगी और एक इधर होगी. There is one quantity for first quantity is there, second is there. We have to plot a graph. For example, once there and there and there. Pick the points. So this will make a path, and this is the graph. So one of the quantity is called, एक quantity को हम कहते हैं independent, that is independent quantity, and second is called dependent quantity. First is independent, second is independent. Independent quantity वो quantity है जो बिल्कुल किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही. For example, a system x equals to 2y. Here x is independent. Dependent is y. Y depends only. For example, y equals to 1. y equals to 1. अगर y की वैल्यू 1 है तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? x की चेंज हो रही है. That is 2. For example, y is 2. तो x की किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? That is 2. So जिस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है इट्स नोन एज डिपेंडेंट. सो इस सिस्टम में डिपेंडेंट क्या है? मेरे पास x है, और इंडिपेंडेंट जो है मेरे पास है y. सो हमारे ग्राफ में हमेशा दो चीजें होंगी. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, अदर इज इंडिपेंडेंट. सो टेक केयर ऑफ दिस के हमारे पास दोनों चीजों को हमें सही तरह देखना है. फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. What is distance time graph? Distance time graph is the graph between distance and time. For example, अगर मेरे पास एक सिस्टम है this यहाँ पे डिस्टेंस होगा मेरे पास और यहाँ पे टाइम होगा. इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस ऑलवेज इन मीटर एंड टाइम जो होगा हमारे पास वो होगा सेकंड्स में. नाउ फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो है. इस सिस्टम को हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फॉर एग्जांपल, मैं अब ग्राफ प्लॉट करता हूं. दैट इज दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज ओरिजिन 0, 5, 10, 15. अब कोई भी सिस्टम है जो स्टार्टिंग में उसने डिस्टेंस कवर किया है 10, दैट इज 10 मीटर.
ठीक है, दैट इज 10 मीटर, टाइम कितना है 0 सेकेंड, टाइम इज 0 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का क्या मतलब है कि डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस सेम रहेगा और टाइम बढ़ता जाएगा। टाइम अब कितना होगा 5 सेकेंड्स, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर ही है, टाइम कितना है 10 सेकेंड हो गया। हाउ टू प्लॉट ऑन ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जीरो डिस्टेंस इज 10 एट टाइम 0, वो पॉइंट यहां पे आ रहा है, दैट इज दिस वन पॉइंट, दिस पॉइंट। देन सेकंड, at t is equals to 5 second, distance is 10 meter, t is equals to 5 second, distance is 10 meter, that is this point. Distance t is equals to 10 seconds, distance is t is equal to 10 second, distance is this. So जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो ऐसा एक लीनियर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का जो ग्राफ है वो एक लीनियर, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ओके। Then the second case is object moving with constant speed. For example, मेरे पास एक सिस्टम है जो at time t is equals to 0 सेकेंड पे वो उसने डिस्टेंस कवर किया 0। After t is equals to 5 seconds, it covered distance of 5 meter. अब टाइम जो ही बढ़ता जा रहा है वो लीनियरली का मतलब यही है कि कांस्टेंट मूव हो रही है उसकी वजह से टाइम 10 मीटर, t is equals to 15 seconds, distance equals to 15 meter, sorry. So हमने ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है, दिस इज द ग्राफ 0 5 10 15, इधर भी 5 10 15, that is distance or time. So first point is how to recognize first point. t is equals to 0, ये point है हमारा, t is equals to 5, d is equals to 5, that is this point, t is equals to 10, d is equals to 10, that is this point, t is equals to 15, d is equals to 15, that is this point. So a linear एक slope बनती है, slope. This is the graph of object moving with constant speed. So it's cover a linear distance with a slope having different values. अब मेरी value अगर differ कर सकती है with respect to this data. Now the next graph is object moving with variable speed. Variable speed का मतलब ये है कि मेरा object 10 seconds में 5 for example 0 second में वो cover कर रहा है 0, that is second, that is distance, second is the time, 0 सेकंड में 0, 5 सेकंड के बाद 5, 10 सेकंड्स के बाद 10, 15 सेकंड्स के बाद 7, 20 seconds के बाद 10. How to analyze? This is the graph D and T. 0 0, that is time is for example 5, 10, 15, 20, and distance is 5, 10, 15. At 0 0 for example अगर मैं 0 point पे हूं तो this is the point. After 5 covered is 5, 10 with 10. Now after 15 seconds it's covered distance of 7. So ये मेरे पास point यहाँ आ रहा है, that is this 7 point इधर है. So this is the point. 20 with 10.
that is the 10. So मेरा ग्राफ जो बनेगा, the graph representation will be like this one. यहाँ से start होके it's linearly curved. So a slope will, this is a graph moving with variable speed. तो जब variable speed करेगा तो it's covered not equal distance, equal interval of time. It changes distance from one point to other. So all the values depends on this speed time graph. Now this is same speed time graph. Object moving with constant speed. Now constant speed जिस तरह distance और उसका बना था, a vertical, a horizontal graph, that is velocity here and time is here. So a vertical horizontal graph is, or also the uniform velocity उसी तरह सेम हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ ही बनेगा, और विद वेरिएबल इट चेंजेस different with respect to this. So it depends on three. The same जो हमारा डिस्टेंस टाइम का बनेगा वैसा ही हमारा वेलोसिटी टाइम का बनेगा, बट डिस्टेंसेस के यहाँ पे डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आ जाएगा, और all the values must be same. Now the next topic is distance traveled by a moving object. For example, in the most recent cases, that is if a system covers, for example, 15 displacement in one time, then it's a linear distance कि एक हमारा सिस्टम है जो 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 5 सेकंड तक इंक्रीज कर रहा है अपनी velocity, then a constant velocity after specific 5 to 20 seconds, then it declines. For example, it's this point और इस point पे आके वो रुक जाता है. So ऐसा क्या होगा? It's the specific case of a moving object. Moving object is the ideal case of the moving object. Moving object में हमेशा हमारा this is the vi, that is moving with a speed starting from there, it's covered distance this and end from this is the vi. So the moving objects start from 0 and ends with 0 2. So this type of graph is used for representation of moving objects, or a distance traveled by a moving persons, or a moving vehicle, or moving somewhat you want. Graph of moving with uniform deceleration. Deceleration का मतलब जिस तरह हमने कहा था कि increase करता है in acceleration, that is acceleration. Deceleration में क्या करेगा? वो सिस्टम जो है वो अपनी velocity या acceleration decrease करेगा, तो so हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा. So this is the deceleration system. Now, equation of motion, the most important part of this slide, the equation of motion. Equation of motion depends on three things. For example, first equation of motion, second and third. First equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. For example, मेरा एक system है that is okay, this is the origin, this is the vi, system vi. This point decreases from there to there, a, and this is the b, and then this is the vi, this is the 0, and this is the point. So by this is the origin, this is the vi point, initial velocity, this is the final velocity, that is vf. अब क्या करेंगे हम इसको ज्वाइन करेंगे. This point will be c and this is d. So हमारे पास two shapes आ गई, दो, that is this one and this one. This is the triangle, this is the rectangle. To solve this, for example, this is v, this is the time, so how to this is the vi. How to find the area of this system 2? Rectangle का क्या area होता है? That is length into width, that is vi multiplied by t. So this is the rectangle, that is second.
what about first one, that is the triangle? This distance is how much? This is the t, here to here, that is the t, and vf minus vi. This is the vi and this is vf. For example, a is equals to vf minus vi divided by t. And what is the value of vf minus vi? That is vf minus vi must be equals to a into t. So this distance is at. So how to find? That is, this is t and this is at. So the area must be half. First length is t and the second is at. So this is the derivation of all the system. उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करनी है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी. स्लोप ऑफ लाइन ए बी का क्या मतलब है? दैट इज द लाइन ए बी. Slope of line AB. This is the acceleration, and this point is C. This point is B, A, B, and C. How to find slope? Slope B C divided by AC. That is the slope. That is the area. जो हमारे पास आता है कि hypotenuse is equals to perpendicular by base. So this is the hypotenuse equals to perpendicular divided by base. In this case, what is the perpendicular? That is BC, and base is AC. So this is the value of acceleration. That is slope of line AB. Now what is BC? What this total line is BC. How to find BC? BC is the BD minus CD. BC is equals to BD minus CD, and the AC equals to OA. So acceleration equals to BD minus CD divided by OA. Now BD, what is the value of BD? BD is VF minus, what is the value of CD? CD is VI. And what is the value of OA, OD or OA? That is OD. So that is OD, because AC equals to OD. So OD value is T. So the acceleration equals to VF minus VI divided by T. Now VF minus VI is equals to AT, and VF is equals to VI plus AT. This is the first equation of motion. This is the complete derivation of first equation of motion. Now moving towards the second equation of motion. Second equation of motion totally depends on the distance it covers. Total distance it covers. First equation of जो हमारी थी motion वो depends करती slope of line AB. Now the second depends on the total distance. Total distance it covers. For example, total distance is the दो depends, जो हमारे पास एक था rectangle, second is triangle. Total distance is this one. अब मेरा जो रेक्टेंगल का एरिया है दैट इज क्या था हमारा VI इंटू टी, और जो हमारा एरिया था ट्राइंगल का दैट इज हाफ टी प्लस AT इक्वल्स टू S.
So this will equals to VIT plus half AT square. So S distance equals to S is equals to VIT plus half AT square. This is the second equation of motion. Now moving towards the third equation of motion. Third is the total area of system, that is average distance of OABD. How to find average distance? Average distance equals to OA plus BD divided by 2 multiplied by OD. That is OA multiplied by OBD multiplied by OD. What is, remember this system, that is, here is the point A, B, C, O, D, that is VF, that is VI. So total area of OABD, हमने अब इस सिस्टम में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये सॉल्व करना, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द होल लाइन, that is OA. What is the OA? O is this line plus BD. BD is this system, this line. OA plus BD by half. Half multiplied by OD. What is the OD? This is this system. इसको दोबारा एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है, दिट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिस्टम था जिसमें ट्राइंगल का हमने किया था हाफ ओ ए प्लस बी डी then whole divided by OD, so it equals to S. Now multiplying this whole, or this is the whole multiplying from whole domain, so 2S अगर हम 2 उधर लेके चले जाते हैं तो 2S equals to OA plus BD into OD. Now the asal main thing requires from this side, that is multiplying BC by OD on both sides. क्या बन जाएगा? 2S BC OD equals to OA plus BD multiplied by BC OD into OD. OD और OD कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. OD और OD कैंसिल होने के बाद द इक्वेशन जो हमारे पास बच जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, दैट इज 2S equals to 2S multiplied by BC by OD equals to OA plus BD multiplied by BC. So what is the BC over OD? BC over OD हमने एनालाइज किया, that is A. So 2S A. What is OA? OA हमारे पास था VI. Just seeing the, आप पीछे जाके डायग्राम लाजमी देखिएगा. VI, BD is the VF, and BC. What is the BC? BC is basically BD minus OA. So this is equals to VF minus VI.
सो अगर मैं इसे पूरे सिस्टम को लिखता हूँ 2s a equals to vf plus vi into vf minus vi, तो हमारे पास बन जाएगा 2s a equals to vf square minus vi square. So तो हमारे पास बनेगी 2as vf square minus vi square. This is the third equation of motion. Now moving towards the last topic of this lecture, that is motion of free falling bodies. Motion of free falling bodies. Motion of free falling bodies. Now the first, Galileo. Galileo was the first scientist to notice that the freely falling objects have the same acceleration independent of their mass. What does this mean? For example, this is the ground and this is a system falling there. It depends everything. There is same gravitational force, that is G. So that the freely falling objects have the same acceleration, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैस. अगर हम मैस को काउंटर नहीं करते, नॉट रिस्पेक्टिव मैस, अगर हम मैस को काउंटर करते हैं तो हमेशा जो बिगर मैस है वो फॉल करेगा जल्दी. लेकिन अगर हम अपने सिस्टम में मैस सेम रखते हैं तो जो डिस्टेंस है या वो टाइम है वो सारों का सेम होगा. इट्स द फ्रीली फॉलिंग, इट्स द गैलीलियो मेथड और गैलीलियो सिस्टम या गैलीलियो रूल of the motion of free falling objects. He dropped various objects of different from Tower of Pisa. This is the important thing. Tower of Pisa. From where? Tower of Pisa से उसने ये experiment किया था. He found that all of them reached the ground at same time. उसने फिर देखा कि हर सिस्टम जो है with not taking mass को काउंटर नहीं करना हमने, independent of mass, जितने भी सिस्टम है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पहुंच रहे हैं हमारे नीचे. देन फ्रॉम देन इट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. अगर उसने फिर कहा कि जो सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, अब उस जो वो एक्सेलरेशन कैरी करेगा, इससे उसने कहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको फिर हम नाम देते हैं G का. The absolute value of G is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लिखते हैं इस स्केल पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब नाउ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर मेरा सिस्टम ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो फिर मेरी साइन की कन्वर्जन कैसी है? अब दिस इज द सिस्टम, दिस इज द ओरिजिन. अगर वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, अगर वो ओरिजिन से अवे जा रहा है तो साइन इज नेगेटिव. इफ इट फॉल्स, अगर वो ओरिजिन यानी कि ग्राउंड सिस्टम के अंदर ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो द वैल्यू इज पॉजिटिव. सो द बॉडीज फॉलिंग डाउन, जो बॉडीज नीचे गिर रही हैं उनकी क्या है साइन? पॉजिटिव. And for bodies moving above from the system or away from the system, the value of G is negative. So in this case, the value of G is equals to minus 10 meter per second. देखें जी, G की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू का यूनिट जो है must are same. So it's also known as acceleration due to gravity. So in this case, G is equals to 10 meter per second. So this is all the representation requiring the value of G. G is positive or G is negative. It depends on the motion.